Good morning, students and dear friends. So let's start. Our next topic is Gauss law. Okay, and this is the chapter second, and we are in a lecture third. Okay, before we are discuss about the Gauss law and Gauss theorem, we will discuss in a previous lecture. In a previous lecture we will discuss about the charge distributions. Okay, what is the mean of continuously charge distributions? हम लोगों ने ये कहा था कि सर किसी भी जो हम लोगों को ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूसली मैनर में, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. आफ्टर दैट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एक कंडक्टर वायर है और हम लोग उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर ले लीनियरली लाइन टू, इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट और नॉट? आफ्टर डेट वी आर डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस. कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें सरफेसली उसके सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कवर करता है जो चार्ज हम लोगों को बस सरफेस को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड सेम थिंग की हम लोगों के पास बैलन है, सॉरी सिलेंडर है, और सिलेंडर में जो वॉल्यूम या स्पेयर है उसमें हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद हम लोगों ने व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज के क्यू नॉट डी क्यू आर स्क्वायर एंड आर के. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फॉर ए स्मॉल एरिया ऑफ चार्ज. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? डी क्यू आर स्क्वायर एंड आर. Correct or not? After that we are discuss about the density, charge density. Charge density of three types. First is linear charge. Second one is what is surface or linear charge density represented by lambda. Surface charge density represented by sigma. And third one is volume charge density called rho. What is the formula of charge distribution per unit length is called charge distribution is per unit length is called linear charge distribution or linear charge density. Charge distribution per unit surface is called surface charge density and charge distribution per unit volume is called. Correct. After that we are induced of the formula for the force and intensity for linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. Correct or not? Okay, today I will discuss about the Gauss law and theorem. Okay, what is Gauss law? Okay, or what is the theorem? Write down. It is given relation between total flux in any closed surface to net charge of the enclosed within the surface. mean Gauss theorem or Gauss law. Actually में Gauss is a scientist and Gauss is a physician. He is give the law or theorem or a mathematical relationship between total flux of any closed surface. Closed surface means this one is a closed surface, पूरा लूप है, एंड किसके बीच में, और नेट चार्ज कि उसका नेट चार्ज कितना होगा, उन दोनों के बीच में रिलेशन दिया. और रिलेशन किस तरीके का? राइट डाउन द स्टेटमेंट. द टोटल फ्लक्स phi e. What is the phi e represent? Electric flux of the any closed underlined closed surface or closed area closed surface is 1 upon epsilon time of the net charge
of the enclosed within the surface mean phi is q upon epsilon naught. What is q? Net charge. What is q? Net charge of the enclosed surface, and you know that epsilon naught is permittivity and what is flux. One thing you know that definition of flux, E dot ds mean integration of E dot ds is equal to q upon epsilon naught. It is a mathematical representation of Gauss law. Write down. Okay. And what is closed surface? Then you are used to bubble in the symbol of summation sign of integration sign. Okay. Done. Proof of Gauss law using Coulomb's law. ओके. और हम लोग दो टाइप से करेंगे. फर्स्ट टाइप जो कर रहा हूं मैं वो आपकी BSER बोर्ड की बुक में मीन्स जो हम लोगों के पास राजस्थान बोर्ड की जो अभी बुक है उसमें ये दिया हुआ है ना. मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी का भी हम लोग सिलेबस लगभग टच करेंगे और किसका भी करेंगे आरबीएससी बोर्ड के. असल में देखो कई तरह के फंडे होते हैं और बहुत सारे टाइप के मेथड फिजिक्स में भी हो सकते हैं क्योंकि काफी जगह हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं. फिर भी मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि जितनी डेरिवेशन है ना वो आप आरबीएससी की बुक की करने की कोशिश कीजिएगा. उसका मेन पर्पस मेन मोटिव क्या होता है कि जब कॉपी चेक होती है तो कई बार होता है हम लोगों के पास आंसर की के अकॉर्डिंग ही चेक कर ली जाती है तो इजी वे में मार्किंग आसान हो जाती है आप लोगों की. बाकी और कुछ नहीं. बाकी मैं बोलूंगा नहीं कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में कि नहीं यही आंसर बोर्ड राजस्थान बोर्ड ने दिया, ये राजस्थान की बुक में तो ये वैलिड है, तो हम लोग उसकी तरह करेंगे. और क्या है लैंग्वेज है. सपोज एक इनक्लोज सरफेस है हम लोगों के पास एस है ना, उसमें एक पॉइंट है पी और उस पर एक चार्ज प्लेस्ड है क्यू, पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इज क्यू. और यहां से ये आपके पास एक एरिया है, इट इज एरिया डीएस. क्या क्या हम लोगों ने कि इनक्लोज सरफेस लिया है, पूरा क्लोज सरफेस लिया है कि एस, वहां के सेंटर पे पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इज ओ एंड द सेंटर पॉइंट प्लेस्ड ऑफ चार्ज इज क्यू. ओके, कंसीडर दिस एंगल इज डेल ओ. व्हाट इज दिस वन? वेयर डेल solid angle of the surface or closed surface. ठीक है. ds is small element area of the surface. ओके, और कंसीडर कर रहा हूँ डायरेक्शन इधर कैसे आएगी ds, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E और एंगल कितना है थीटा इज द एंगल बिटवीन ds एंड E. ओके, ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम. सपोज देयर इज ए क्लोज्ड surface area is S, the point O is present of the center point of the closed area. Write the language or you write it. Okay, I provide the PDF file of the notes, then you write the language of the notes. Okay, clear? Okay, okay.
electric field. According to definition of electric field, K Q upon R square, and R factor. Equation number first, correct or not? R square. K Q upon R square is R vector. It is a electric field. Okay, we know that, or according to definition of flux, what is the flux definition? Phi E is E dot ds, and small flux because the area is small. What is E dot ds? Correct or not? D phi is E dot ds cos theta. Equation number 2. Okay, put value of E in equation 2 from equation first. Then what we done? D phi is equal to what is K Q R square ds cos theta. Any doubt? Okay, you know that what is ds cos theta is the component of ds. Okay, then total flux is what is phi E is the integration of d phi. Put value of d phi E. Okay, phi E is K Q R square ds cos theta. Correct or not? Okay. What is solid angle? Solid angle. You know, solid angle is formula. We are study of the angle in a chapter number first in a 11th class. Steradian and radian. Then the solid angle is solid angle. What is the formula? Arc upon radius square. Correct or not? In this one, solid angle is ds cos theta upon r square. Because this is a solid and this is a ds, then the component of ds cos theta of the arc. Correct or not? Then consider this is equation number 3. Put the value of d on ds cos square cos theta upon r square in equation 3. Okay, ds cos square theta is E is equal to KQ or dO. Okay, KQ is constant, KQ integration of dO. What is dO? Solid angle. Then the angle, this one is solid angle. Then the overall angle of the surface is total angle is 4 pi of the closed surface is. Put the value of total angle is KQ multiple में 4 pi. What is the value of KQ? 4 pi epsilon naught. Put E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught multiple में 4 pi, or this one is cancel out to 4 pi to pi, means E dot ds is equal to Q upon epsilon naught. Hence proof. Let's see again. What is this? Total flux is d phi is equal to this one. Put the value of KQ ds cos theta upon r square. Okay, solid angle component. Solid angle is the component of area surface area surface ds cos theta upon r square. Okay, then put the value of ds cos square theta upon r square on the in this equation. Then what is the value of KQ dom? What is the dom of the closed surface is 4 pi. Then put up the value of 4 pi, and okay, this one is the method of the Rajasthan board. Okay. In the RBSC board, NCERT board or CBSE board, what is the consider a sphere of radius r
consider a space of radius r in the center point, and the center point charge q is placed, then what be done? This is a one part of the, and the surface is ds. Okay, and the direction of ds and e is same direction. Consider the direction of e and the surface area vector is the same direction. Okay, then what will happen? E is equal to what is kq upon r square, correct or not? And de phi is equal to what is de phi? E ds cos theta. Angle between theta is 0, then de is equal to e dot ds. Cos 0 is 1. Okay, then total flux is, what is total flux is phi. Phi e is equal to d phi. It is a CBSE board formula. Okay, then what is, put the value of k q, what is value e dot ds. Okay, e is constant in ds. Put the value of e is k q upon r square and ds. What is the ds? Area of ds, area of sphere is 4 pi r square. Then E is equal to k q r square 4 pi r square. Cancel out r square. Put the value of k is 1 upon 4 pi epsilon naught multiple q multiple में 4 pi. Cancel out to 4 pi to 4 pi. Now again prove that E is phi is equal to q upon epsilon naught. Okay. Any doubt? Okay, after that we are some discuss about some important point related to Gauss law and Gauss theorem. Okay, Gauss law limitation is always be in a closed surface. First is Gauss law valid for a closed surface. If the surface is not closed, then Gauss theorem and Gauss law does not valid. Okay. If charge, okay, charge are present out of the Gauss surface. Gauss surface or Gaussian surface is a imaginary Gaussian surface, is imaginary surface considered by the Gauss, because it is a used of the imaginary Gaussian surface. We are solve easily all equation related to flux. Okay. Then the flux value of charge is 0 inside the closed surface. So the total flux is 0 because charge is 0. Okay. Gauss surface follow the 1 upon square distance rules, because by the Gauss law use the Coulomb's law. It is a Coulomb's law, correct or not? So some it is an important point related to Gauss law. Okay. Any doubt? Nothing? Okay, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे.